Hello everyone, welcome to our series on transformation, and today we will be talking about how to transform the energy of irritation to patience. So first, before we get into it, I think this is one of the most common emotion and everybody goes through it, and the problem is that whenever we face any kind of irritation, unfortunately, the first thing we sometimes end up doing is we blame somebody else. We often say कि नहीं इसकी वजह से मुझे इरिटेशन हो रहा है, या हम लोग बहुत आसानी से किसी को बोल देते हैं अरे तुम मुझे इरिटेट मत करो, या तुम्हारे वजह से मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है. So one thing we need to understand that if we don't have the energy of irritation within us, nobody will have the power or the audacity to irritate us. It is only possible for other people to bug us or irritate us अगर वो energy हमारे अंदर है. So next time if somebody irritates you, या अक्सर हम लोग ये statement पास कर देते हैं कि इसकी वजह से मुझे irritation हो रहा है. Next time when that happens, think about it कि irritation आया भी तो कहाँ से आया. ये था तो हमारे ही अंदर, और क्योंकि वो अंदर था कुछ एक situation की वजह से trigger होके बाहर आ गया. Like, let me give you an analogy. For example, if there is an orange fruit, I had read this somewhere, by the way. It is not my understanding, but I really liked it, so just sharing it. It was kind of a Facebook or I think a WhatsApp forward, but it was very nice. So उस explanation में लिखा हुआ था कि for example, if there is a fruit, जैसे orange fruit. Now orange fruit को अगर आप मारोगे, पीटोगे, उसको पटकोगे, whatever you do with this fruit, you try to crush the fruit, you do whatever. तो ये फ्रूट से क्या निकलेगा? If there is an orange fruit and if you try to trouble it, if you try to cut it, if you try to trigger it, you try to smash it, you try to suppress it, what will come out of an orange? Nothing but orange juice. Similarly, if you do the same thing to a watermelon, what will come out of the watermelon? Watermelon juice. ऐसा नहीं होता है कि अगर आप वाटरमेलन को क्रैश करते हैं और उस दिन उसका मूड ख़राब होता है, या मैं क्रैश करूँगी तो उसमें से वाटरमेलन जूस निकलेगा, या कोई और क्रैश करेगा तो उसमें से ऑरेंज जूस निकल जाएगा. इट डजंट हैपन लाइक दैट. उसके अंदर से वही निकलता है जो उसके अंदर है. सिमिलरली फॉर अस एज ह्यूमन बीइंग्स, whatever emotion we have within, difficult situations में, difficult circumstances में, when life kind of triggers us, life kind of throws challenges at us, हमारे भी अंदर से वही निकलता है जो हमारे अंदर है. If we have irritation within us, what will come out is nothing but irritation. And we can't blame anyone. Like the orange cannot blame कि नहीं तुमने मुझे मारा इसीलिए ऑरेंज जूस निकला. वो तो ऑरेंज जूस इसलिए निकला क्योंकि उसके अंदर ऑरेंज जूस है. Similarly, if irritation is constantly coming out of you, we need to realize that nobody is throwing it on you. It is inside you. And when somebody rubs us emotionally, when somebody triggers us emotionally, तो अंदर से क्या निकलता है? Irritation निकलता है या anger निकलता है. I repeat, इसलिए निकल रहा है क्योंकि वो हमारे अंदर है. So in today's session, we are going to talk about 3 tips. 3 टिप्स हम लोग आज के सेशन में सीखेंगे कि नेक्स्ट टाइम अगर इरिटेशन हमारे अंदर से निकलता है तो उस इरिटेशन का हम क्या करें. Now often what happens is if somebody is bugging us, triggering us, we get irritable at that person. तो हम लोग उसके ऊपर अपना इरिटेशन या अपना गार्बेज थ्रो करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कर्मा, मोर इरिटेशन कम्स बैक टू अस एंड द साइकिल कीप्स गोइंग ऑन. So you can try this, and we will be talking about 3 techniques, or 3 simple techniques of how to transform this energy of irritation to patience. Now ये टेक्निक सीखने के पहले छोटा सा रिफ्लेक्शन करते हैं. सबसे पहले तो अपने आप को समझते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ से इरिटेशन होता है. एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ डिफरेंट, नो. Like for example, in my case, there could be certain things, अगर वो गलत भी हो रही है तो मुझे उतना हो सकता है bother ना करे. लेकिन there can be some things, even if it is small, maybe it kind of triggers me or irritates me. So similarly, we need to think
कि आपको अपने आप के लिए सबसे पहले तो आप ये सोचिए, या यू जस्ट टेक अ पीस ऑफ पेन एंड पेपर एंड राइट डाउन 3 things, just 3 things to start with. What are these 3 things that perpetually happens and kind of irritates you? वो 3 चीज़ें भी हो सकती हैं, या 3 इंसान भी हो सकते हैं, 3 लोग भी हो सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग. सो व्हाट आर दीज 3 aspects, things or people or circumstances or events? कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो आपको इरिटेट करती हैं? Who has this power, or whom have you given this power to irritate, to bug you? Now often it could be certain people. जैसे कुछ लोग होते हैं, हम लोग बोलते हैं अरे इसकी वजह से मुझे इरिटेशन हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उससे दूर रहने लगते हैं. लेकिन उससे दूर रह के तो कुछ होगा नहीं, बिकॉज इफ यू हैव नॉट लर्न द लेसन, यू विल अट्रैक्ट अ सिमिलर काइंड ऑफ अ पर्सन हु विल कम इन टू योर लाइफ एंड अगेन इरिटेट यू. एंड देन यू विल से कि नहीं, सभी लोग ऐसे हैं, या हर जगह इस पूरे सिटी के ही लोग ऐसे हैं. तो वी काइंड ऑफ कीप ऑन इंक्रीजिंग होराइजन. एक इंसान से प्रॉब्लम है, फिर हम लोग बोलते नहीं पूरी फैमिली ही ऐसी है, पूरे फैमिली से प्रॉब्लम होता है, फिर हम लोग सोचते नहीं द होल सिटी इज ओनली लाइक दैट. देन यू विल से द होल कंट्री इज लाइक दैट. सो योर इरिटेशन इज ओनली एक्सपैंडिंग डे बाय डे. So I want you to just reflect and think about 3 things or 3 people or 3 circumstances where you lose your patience. Those are basically your weak points. What are these 3 points where you lose your patience and you start getting irritable? Now once you have identified, इसको overcome करना उतना आसान नहीं. अगर आप सोचेंगे कि ओवरनाइट ही आप इरिटेशन बंद हो जाएगा, यू हैव टू प्रैक्टिस इट. सो प्रैक्टिस इट फर्स्ट बाय स्टार्टिंग विथ 3 things, 3 aspects और मे बी 3 people, जो भी आपने लिस्ट में डाला हो. देन जस्ट प्रैक्टिस विद दोज 3 aspects. वो 3 चीज़ के लिए ही आप प्रैक्टिस करिएगा कि नेक्स्ट टाइम जब ऐसा होगा तब हम क्या करेंगे. सो आई एम गोइंग टू शेयर 3 tips विथ यू. टिप नंबर 1, नेक्स्ट टाइम व्हेन समबडी, सपोज ये हो सकता है, सपोज आपकी लिस्ट में आप लिखे हो कि कोई भी आपको अगर क्रिटिसाइज करता है तो आप इरिटेट हो जाते हो, या अगर कोई आपको कुछ भला बुरा बोल देता है तो आप इरिटेट हो जाते हो. सब पीपल दे ऑफन फील दैट अगर कोई मुझे डाउट करता है तो मुझे बहुत इरिटेशन हो जाता है. Some people they say that if things are not organized in my house, I get irritable. अगर कोई डिले कर रहा है तो हम इरिटेट हो जाते हैं, कोई मुझे झूठ बोल रहा है तो हम इरिटेट हो जाते हैं. तो आपको सबसे पहले अपने आप को समझना है कि कौन सी चीज़ से आप इरिटेट होते हो, कौन सी चीज़ में आपका पेशेंस खो रहा है. Now for example, if the answer is, suppose you get irritable if somebody criticizes you. Suppose for example आपको पता चला कि हाँ कोई भी जब मेरे बारे में नेगेटिव बोलता है मैं इरिटेट हो जाती हूँ. सो दिस इज़ अ गुड रियलाइजेशन. तो सबसे पहले तो हमको अवेयरनेस लानी है कि क्या चीज़ में मेरी पेशेंस हो जाती है, कहाँ पर मेरा पेशेंस ट्रिप कर जाता है. ओके, सो सपोज यू रियलाइज दैट येस इफ समबडी क्रिटिसाइजेस मी आई गेट इरिटेबल, एंड देन you take this as a temporary truth. Then you can do any of these 3 techniques. Number 1, next time if somebody criticizes you, the first thing that you will do or you can do is simple deep breathing. Just do deep breathing. क्योंकि जब हम लोग डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे बॉडी में एक चक्रा है, उसे बोलते हैं सोलर प्लेक्सस चक्रा. When you do just deep breathing, तो ये चक्रा थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाता है, क्योंकि whenever you get angry or you get irritable, then this chakra kind of वो बहुत ट्रिगर हो जाता है और अपने अंदर का एंगर और इरिटेशन बढ़ सकता है. So to cool it off, you can simply do deep breathing. Simple. Just inhale deeply and exhale deeply. Inhale deeply. Exhale deeply. Just do it 7 times. The moment you finish it, you will feel peaceful. You will feel calm. And you will not feel like reacting. And automatically क्या होगा कि आप उतने आसानी से react नहीं करेंगे. So the first step, the first technique which you could practice, and ये आप कहीं पर भी कर सकते हैं, even if you are in a public place or you are with people around. This is something very simple which you can do anytime, anywhere. It's just very simple. Okay. Now second technique, दूसरा तरीका कि अगर आप next time से irritate होंगे तो दूसरा तरीका आप क्या अपनाएंगे.
So one is of course deep breathing. Second technique that you could do is, if you like to pray, then you can do it with simple prayers or affirmations. If you believe in that more, you can try that. Now how do you do that? Now you're feeling irritable, so then you can just close your eyes and then you say, thank you God for blessing me with peace and patience. Thank you God for blessing me with patience. Thank you God for blessing me with patience. Thank you God for blessing me with patience. Gently open your eyes. How do you feel? Do you already feel peaceful and little patient? Prayers have a lot of power. So just by praying to God, and you need energy of patience. So if you believe in prayers, तो आप ये वाली टेक्निक भी अपना सकते हैं. Just pray. Just invoke to God to bless you with the energy of patience. So ये हो गया दूसरा टेक्निक. Now तीसरा टेक्निक. The third way that you can try to enhance your patience. Now often what happens is we get irritable, especially at certain type of people. Like for example, as we shared earlier, that you get irritable when somebody criticizes you, or you get irritable when somebody is unorganized, or somebody is getting very lazy. So what you could do is, instead of getting irritable or reacting to it, you can just mentally bless that person. You can raise your hands and bless, or you can just mentally affirm and bless that person just with the help of your thoughts. Like for example, if somebody is lying and that is kind of irritating you and bothering you, so you can just mentally say, thank you God for blessing this person with honesty. Thank you God for blessing this person with honesty. Thank you God for blessing this person with honesty. And then keep blessing, and you can continue to do this for about, if you like, for about 6 to 7 times, or maybe even 10 times. Just keep affirming. तो आपको किसी में भी कुछ नेगेटिविटी दिख रही है, उसकी वजह से आप इरिटेट हो रहे हो, तो आप उसे ऑपोजिट पॉजिटिव एनर्जी से ब्लेस कर सकते हैं. And you will be amazed that you will feel so peaceful after that. You will feel so relaxed after that. It will not bother you so much. So these are 3 simple tips that you could try to overcome irritation. 3 very practical and simple tips. So that is it for today. Do share your feedbacks, leave us a review, and try these tips, and do let us know if it is helping you. Thank you very much. See you again.